थोड़े से सस्पेंशन की प्योरिफाइड होते हैं, एंड देन दिस मिरेकल टेक्स प्लेस एंड वी मीट अ गुरु. This is one of the most important time of any lifetime. It is even better than being an emperor in your lifetime to meet a guru like Guruji. He used to say that ekta vada guru aaya hega and he is the avatar of this time. He is the bearer, transmitter of all blessings, and this we have seen ourselves. And I wish to really scream and tell people to please remain attached to him. There is nothing greater than him at all. And we have to be a seeker, and he will definitely seek us. Now I'll just tell you a little brief about Guruji, what we learned. एक तो लेख मिटा के दोबारा लिखना है. In my case also, I could have not crossed the age of 45, but one Vaisakhi day he tells me, he says, "Sukhi, tanu new life diti." And I understood that he has given me an extension. Then we say कि मरना जन्ना रब दे हाथ है. Then who is he? In our family also we've seen मरना जन्ना, how he has saved us, how he has given birth to my grandchildren. And if only he can control it, then who was he that who came? फिर इनकी एक बार कुंडली बनाई थी. एक और महापुरुष है जिन्होंने हमें इनके पास भेजा था. He makes a very precise kundli. He made his kundli one day, the day he had taken my black magic off me. So we were sitting in Jalandhar Mandir, and Guruji, my father, my two daughters, and this Mahapurush walks in. And he tells me, he says, "Riba, tere saath chehre ch bahut farak hai." So we all started crying that Guruji removed this black magic, which was very severe, and nobody else could have done it. So then after that, Guruji says, "Okay, Sukhi, would you like to make another kundli?" मैंने कहा ना जी, मैं तब कोई कुंडली नहीं बनवानी, कुछ नहीं बनवानी, मैं तो बस आपके सहारे जी आज तो बात. कहते ठीक है, सिर्फ तू नहीं बनवानी तो मैं बनवा लेना हूँ, बनवा ली ऐसी अपनी कुंडली. मैं कहा हाँ जी महाराज. उन्होंने कागज मंगवाया, I got a paper pen and he wrote his name and his date of birth and क्या के बनाओ. उन्होंने फटाफट वो खाने बना के कहने लगे कि सुनो बिबा, दिस इज फॉर यू. कहते he is ज्योत, जगत की ज्योत. His Jupiter and his sun degree is so great that if he wants, वो सन की रेज ਨੂੰ गिरा सकते हैं अपने हाथों में. And he is for everybody. So जगत की ज्योत. Then once he was sitting here in Chandigarh, rocking chairs पे बैठे थे, and ये संत महाराज जो जिन्होंने कुंडली बनाई थी ये भी थे, और मैं बैठी थी इनके चरणों में, and I was pressing his feet. So suddenly गुरुजी कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆ ਬਾਬੇ. तो एक ਜਿਹੜੇ महापुरुष है ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਚ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਂगे, ਸਾਡੇ ऊपर पर्दा नहीं पा सकते. क्रिएटर कहो क्रिएटर. वो मेरे कानों के लिए था, फॉर मी टू अंडरस्टैंड के हु इज गुरुजी. फिर उन्होंने दसिया, कहते सारे लोग उनको अपने हाथ में जैसे आमला रख लो अपने पाम के ऊपर, ऐसे इनको सारे लोग नजर आते हैं. गुरुजी 10 द्वार तो ऊपर सीखे. गुरुजी से मैं लाइफ जो फॉर्म लेके आया हूँ, कोई गुरु नहीं तारिया, मर्जी ना लांदा हूँ और मर्जी ना जाता हूँ. ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ. ਇਸ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬ ਜਲਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. एंड हु इज ही हु कैन गिव यू दर्शन ऑफ अदर गुरुज. हमने उन्होंने दर्शन 10 गुरुओं के करवाए हैं, ओनली मेड पॉसिबल बाय गुरु जी. हु इज ही दैट हु कैन कंट्रोल and give water, give rain whenever he wants to. He knows everything, every past, future, life, birth, everything. We met him in 92 ji and did not connect. वो भी एक अपना ज़्यादा सत्संग है. And 17th August 94 हम वापस जा पहुंचे उनके लिए, उनके पास. जलंधर की बात है, मंदिर बंद था, हमें नहीं पता था कि मंदिर बंद भी होता है. तो हमें वी वर अलाउड इन.
अंदर गए तो कोई नहीं था. We were made to sit in the room दरबार में, and Guruji came. Guruji came and he tells me, he says, Sukhi, Karminder Kaur di beti, that's my mother's name, तू 70 साल की तपस्या बाद मेरे को वापस आई है. Then he told me my अरदास जो मैं गुरु नानक को करती थी, and he told us what time we used to get up, how long we used to sit for parts, my daughters, my father, myself, and word to word what I used to tell my guru. And that nobody can know because none of my children knew, nobody knew what ardas I used to do. And he tells me, hun main aa gaya haan te tu mere naal gal nahi kar rahi. And I used to call him, okay, I want to meet you. I had this urge from my childhood that I want to meet God. So that was my beginning and my ending of everything. I never looked back after that, nor did my family. एक बार he came to Chandigarh. Suddenly 7:30 बजे मेरे को फोन आता है, सुखी मैं ट्रिब्यून दी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, सुखमनी नु कह मेरे अगे गड्डी लगा के मैनू घर लेके आए. एंड आई एम वंडरिंग कि गुरुजी आप इतने बार घर आते हो तो हाउ हैव यू फॉरगॉटन. बट देन वी हैड लर्न बाय देन कि वो लीला बहुत करते हैं. So this was another लीला. I quickly told my daughter, I said, get ready, go गुरुजी को लेके आ. So she went and गाड़ी आगे लगा के गुरुजी को घर लेके आई. घर आए तो the minute he walked into our room, all the photographs, whether they were of Guru Nanak, Guru Gobind Singh Ji, Shivji wale Sai Baba, Guruji, they all started blinking and lip movement started. There was no voice, but they started blinking and lip movement. Guruji got into my blanket, which was lying on the bed, and he just looked at me and smiled. We did not ask, nor did he say anything after that. उसके बाद उन्होंने एक my daughter used to take this Herbalife, which used to come for losing weight. तो वो पड़ा था तो मैंने कहने आ की कहेगा. मैं कहती ਇਹਦੇ ਨਾਲ पतले होते हैं. कहते कौन खांदा है. मैं कहती सुखमनी लंदी है. कहते अच्छा पतले होंगे लिया सानू भी दे. तो he had a capsule, he had the shake, and उन्होंने अपने चरणों पे और अपने फेस पे मालिश करवाई. उसके बाद सुखमनी को मुआ के जा पानी तैयार कर जैसे स्नान करना है. आफ्टर दैट सुखमनी प्रिपेयर्ड द वाटर. हमारे पास टॉवल्स एंड चप्पल वगैरह होती थी बिकॉज ही कुड हैव कम एनी टाइम. एंड गुरुजी वेंट इन फॉर अ बाथ. I want to say something which I've never heard, and I don't know with my age if I will ever hear it again. इतनी धुन से, it was mesmerizing धुन जिससे उन्होंने ऊंचा ऊंचा पाठ करके स्नान किया. We could not understand anything, but it was so capturing. मैं तो कमरे में कोने में बैठ गई. सुखमनी went outside into the veranda and sat down there, and we heard him having स्नान with such a धुन. I cannot describe it. We wouldn't been able to feel it. बाहर आए तो मैंने कहते सुखमनी कितने. मैं कह जी बुलाती हूँ. I called her. अपना ट्रैक सूट इसके हाथों में फेंकते हैं. कहते ले आप आके सैर कराया कर तो तू पतली हो जाएगी. तो सुखमनी से गुरुजी मैं अगर इसको पहन दिया तो ये खत्म हो जाएगा, मैं तो इसको रखूंगी. कहते अच्छा अच्छा चल तू रख ले. उसके बाद he sits in the lawn at the back and he tells me that Sukhi hissa machhi nu keh mainu parontiyan khilai. Hissa machhi was a Bengali maid mere father ki. Guruji was very fond of her and he could eat food cooked by her hand. So as usual Punjabis हमारे पास मेथी गोभी मूली हुंदी सी and वो परांठियां बहुत शौक नाल खांदे सी. चिट्टा मक्खन बहुत शौक नाल खांदे सी. लस्सी पींदे सी. तो वो ब्रेकफास्ट वो बना रही थी एंड सुखमनी वाज सर्विंग टू गुरुजी. मैं नीचे घास के ऊपर बैठी थी तो मैंने कहते सुखी तेरे मन के एक क्वेश्चन है कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं. मैं कहा हाँ गुरुजी मैं सिख फैमिली में बिलोंग करती हूँ, मैंने मुझे पूरा नहीं पता हैगा ते भी क्यों रखते हैं. ही सो पावरफुल, उन्होंने की लोड़ है वेपन की. कहते वेपन नहीं हैगा. कहते हरेक यूनिवर्स च एक शिव ब्रह्मा एंड महेश ब्रह्मा जी है विष्णु जी एंड कहते मैं वो हैगा महाशिव जेरे इन्हां सारियां नूं अपने हत्थ च रखदा.
That day he opened our eyes even much more, explaining कि वो कौन थे. उन्होंने नाश्ता किया and then सुखनी came, तो सुखनी को फिर बोला कि भी मैं महाशिव. And you won't believe, उस बाथरूम को हम 28 days नहीं इस्तेमाल कर पाए, इसमें इतनी ज्यादा खुशबू थी. उन्होंने उसके बाद संगत भेजी कि जाओ देख के आओ सुखी के उस कमरे में क्या हो रहा है और उस बाथरूम में कितनी खुशबू है. वो तैयार होके ही वेंट टू अटेंड द फंक्शन एंड उसके बाद हमें बुला लिया कि तुम लोग भी तैयार होके आ जाओ. सो वी वेंट. देन ही कॉल्ड अस टू दिल्ली. तो फोन किया कि पहुंच जाओ. हाँ जी महाराज. कमरे में बुलाया. ही सेड सुखी वो जरा हर्बल लाइफ खांदी सी सुख मिली. वो कहते कितनी सेल हो जानी थी. वो असी खा के सारा असर अपने ऊपर ले गया. कोई भी किसी को दवाई खाने से पतले होने की जरूरत नहीं है. इट इज डेंजरस. नेचुरली करो, सैर करो. सैर को उम्र देख के गए हैं कि हर एक बीमारी का इलाज सैर है. सो वी आई हाथ जोड़ो ऐसे गुरुजी मैनू तुसी माफी दे दो एंड आपका शुक्रिया तो असी कर ही नहीं सकते. ऐसे एक बार माय फादर हैड हाउस इन संगरूर ऑल्सो एंड एक दिन फोन आया कि भी वहाँ चोरी हो गई है. तो हम लोग सेवा में थे गुरुजी के यहाँ. गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में थे. तो माय फादर लेफ्ट एंड सुबह सुबह निकल गए देखने के लिए. तो while we were doing सेवा, गुरुजी called me and he said कि डैडी संगरूर गए हैं. मैं क्या हाँ जी महाराज. कहते उसे चोरी हो गई. मैं क्या हाँ जी महाराज. कहते फिक्र ना कर ऐसी उन्होंने अन्ना करता. एंड यू वोंट बिलीव उधर मेरा सारा सामान पैक्ड था, लिस्टेड ऑन द कार्टन. और उसने करना था कि अंदर जाके उसने चिकनी खोल के एंड सारा लोड करके कार्टन को ले जा सकता था विद एवरीथिंग इन इट. सो वी थैंक हिम अगेन. उसके बाद हम फिर काम कर रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम माय फादर व्हेन ही इज कमिंग बैक तो गुरुजी फिर मैंने बुलाते हैं. कहते सुखी डैडी वापस आ रहे हैं. मैंने कहा हाँ जी महाराज अज ही वापस आ रहे हैं. कहते बहुत बड़ा एक्सीडेंट था. मैं कहते इट वाज अ ट्रक which could have head-on collision हो जाना सीधा. And you can imagine it scraped the entire car from the side where my father was sitting. गुरुजी कहते हैं असी आंच नहीं आन दिती, असी नाल बैठ के जाके. And we had tears in our eyes. He's such a guru. Cannot thank him ever. There are so many things that one can say about him. उनके ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिख सकता है इंसान. वो इतना बड़ा है. And I just say one thing, that God is truth. Guru is the truth. This world is a dream. चतुराई नाल, पैसे नाल, प्रसाद चढ़ाने नाल कुछ नहीं मिलेगा if हमारा माइंड साफ नहीं है. पूजा पाठ और सेवा करनी है हमने शुद्ध हृदय से, क्योंकि गुरु ने तो हमारा रूह देखनी है, हमारी सोल देखनी है. वो कहते थे खेती सिर्फ बीज सिटन नाल नहीं उगदी. पहला खेत नू तैयार करना पड़ता है, फिर उसको संभालना पड़ता है. नहीं तो बाहर से आके चुप के चले जाते पक्षी जानवर. कहते कि तुसी नहीं करोगे तो कोल्लू दे बैल मंगू. कहते घूमते रहोगे एक जगह से, साडी प्रोग्रेस कोई नहीं होगी. लख मत्थे टेक लो, प्रसाद करवा लो, सत्संग रखो. जे संभालते जुगती नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं आएगा. कहते सी पेड़ की जड़ नू पानी दो, पत्तियां नू देण दी लोड़ नहीं है. रुखा अपने आप छावां देणगियां. सो गुरु इज अ वेरी वेरी बिग ट्री फॉर अस, एवरीथिंग फॉर अस. He is our only protector, and yes, I want to scream and say कि इससे ऊपर कोई नहीं है. जुड़े रहो. हमारे टाइम हमें बता गए थे, and I have been saying so. Guruji's words to people कि please जुड़ो गुरु नाल, क्योंकि बहुत ही माड़े वक्त है. Thank you so much, and God bless all of you. May Guru help all of us.
Okay, Aunty, if you could please share of being a Jalandhar or something like that. Aunty, I'm okay. Whatever he puts in my mind, that is, I'll share that. एक बार he took me in his car from Jalandhar to Patiala. It was New Year, and I was sitting with him at the back. The car was going at such a speed that's unbelievable. I mean, I felt it was not even touching the road probably. तो हम जाते जाते ये जो संत महाराज जी हैं जिन्होंने हमें भेजा था इनके पास, the one who had told me to meet him and all, वो आगे बैठे थे. तो after some time he starts the satsang, turns back and tells me, विभा, तुम्हारी क्वेश्चन है जो मैं आज बता रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ. I had a lot of questions about life, about death, and so he answered all my questions, and I just kept looking at Guruji. So short of Patiala, he tells me, he says, "Vibha, जे कुछ मंगना है ना गुरु को लो, तो असली चीज मांगी." So I turned around to Guruji. I was so foolish, I'm still very foolish. तो मैंने कहा, गुरुजी, मैंने ना असली चीज देना. तो गुरुजी हंसन लग गए, कहते सुखी, जे गरम गरम चाह पी लेंगी, तो मुंह सड़दा है कि नहीं सड़दा है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सड़दा है, कहते हौली हौली मिलती है. That was my first trip with him, and he was so fast about everything. उन्होंने खाना भी, उन्होंने चलना, उतरना. मेरे वो स्ट्रैप वाले जूते थे, which I've never again worn in my life with him again. By the time I'm taking off my shoes or putting on, वो पहुंच भी जाते थे या कार से बैठ जाते थे. तो eventually मैं अपने हाथी से भर के वो भाग लेती थी उनके साथ. Short of a place called गोविंदगढ़, एक कर्व आता है. रात का टाइम हो गया सीगा, तो हम लोग गोविंदगढ़ थोड़ी देर रुके उनके साथ. शॉर्ट ऑफ गोविंदगढ़ एक कर्व ऐसा आता है कि मैंने कहती सुखी, आज पिछे देख नजारा, ना तू कदे देखा है ते ना तू कदे दिखेगी. शिव जी की बरात. सो आई लुक बैक, और मेरे को लाइटिंग कार की है फॉर्म द माला ऑफ लाइट. मैंने कहते देख शिव जी की बरात. And you won't believe it was such a beautiful नजारा. और मैं आज भी ये अरदास करती हूँ कि मालिक, ये जो माड़े टाइम है, सारियां ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਨ वक्त आएगा, ताकि किसी ਨੂੰ तकलीफ ना आए. वो तो इतना दयालु गुरु है, full of love. He was just a bundle of love. But here I will give you another satsang. गुरु कहते सी मैनू संगत बहुत प्यारी है. जे संगत प्यार करती है तो गुरु प्यार करते हैं. तो हमें ईर्खा, हमें किसी के साथ एनी काइंड ऑफ कंपटीशन ये नहीं रखना. हमने गुरु के नजदीक जाना है. इसका मैं इसलिए आज एक सत्संग सुना रही हूँ बिकॉज हमारे लिए भी एक लेसन था. हमने किसी के घर में ठहराया गुरुजी ने एक बार, एंड वो लोग वेल ऑफ थे. दे गेव अस वेरी गुड ब्रेकफास्ट. बहुत अच्छा उन्होंने ऐसी बातें उन्होंने की, सत्संग भी करते थे. लेकिन जिस कमरे में हमें ठहराया, इट वॉज लाइक अ सर्वेंट क्वार्टर. बाथरूम टूटा हुआ था, वॉट वॉज ब्रोकन, सिंक वॉज ब्रोकन. मेरे फादर हमारे साथ थे. हमें हुक्म होता था 5 कपड़े और एक ब्लैंकेट रख के हमेशा मेरे पास आना है जब भी आओ. तो द बेड शीट वॉज सॉइल्ड. मेरे फादर, सर्दियों का टाइम था, हम अपना ब्लैंकेट मेरे फादर को दिया. उनका जो एक पतला था, सुखनी एंड आई शेयर्ड. तो वेरी डिफिकल्ट टाइम पास द नाइट. Water in the morning, we would get about quarter a bucket of hot water for 3 of us, which we would give most of it to my father, and हम लोग एक sort of a wash ही लेते थे. ब्रेकफास्ट खाया, सत्संग किया, पहुंचे मंदिर. गुरुजी कहते क्यों सुखी, कंफर्टेबल? मैं कहा हाँ जी गुरुजी कंफर्टेबल. अच्छा, फिर एक रात हो रहा है. अगेन द माइंड वुड से कि हुक्म तो मालिक दा हैगा. अगेन वी स्टेड अनदर नाइट. अगेन सेकंड डे वी वेंट बैक. सुखी कंफर्टेबल? हाँ जी गुरुजी, एक रात हो रहा है. ठीक है महाराज. अगेन द थर्ड नाइट वी स्टेड देयर, एंड previously we came to know some more people stayed there, but they ran away and went to booked into a hotel. उसके बाद
this family's son was to get married, and Guruji used to say, "Don't do it over here. The wedding will not be successful. Don't do it." But I guess it was karma or whatever. They did not listen, and Guruji also never went for the wedding. We also happened not to go that day for the wedding. Later on, we came to know that there was a dowry case against them. They were put behind bars, and their property, their house, everything had to be sold. So I'm not saying because of us or anything. It is sangat. Guruji used to say, Guru number 1, Bhagat, sangat Guru number 2, Rab तीसरे नंबर पे आता है. इसलिए we have to learn to respect each other. And जो संगत प्यार करती है तो गुरु definitely प्यार करेगा. This was a very big lesson for us to learn. And आज तो ऐसा टाइम है कि किसी का बुरा सोचो ही नहीं, ना झूठ बोलो. Let us mend our ways, क्योंकि उसने तो हमारा अंदर से देखना है. हम सबको चीट कर लेंगे लेकिन उसे नहीं कर सकते. This is what I say. Thank you so much. Yeah, I think just a small last request, important. Did you also ask that to Guruji? कैसी सेवा क्यों करवाते हैं? सेवा मतलब why कैसी सेवा करने हैं? Guruji we do it. हाँ जी, we must do सेवा out of love for him. कि मालिक ये भी तेरे बंदे हैं, ये भी तेरिया चीज़ां है क्या? महापुरुष ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਮੰਗੂ ਰੱਖੀਦਾ है, जो हम लोग समझ ही नहीं पाए. ऐसा बड़ा रब आया तो हम लोगों ने क्या किया? किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए. असली चीज तो आप निकली नहीं जिसका पर डालती हूँ ना कोई. एंड आई रिमेम्बर हिम ऑल्सो टेलिंग मी वन, इसमें मैं आपको बता दूं जो ये टाइम आ रहा है. मेरे को एक बार कार में लेके गए इन दिल्ली और मैनू कहते सुखी सब्जियां तो खाया ही ना करो, एक दिन सारे कीड़ा पै जाना हैगा. मैं क्या हाँ जी महाराज, मैं पत्ता गोभी तो खाती नहीं हूँ. ये टोल्ड अस नॉट टू ईट पत्ता गोभी लॉन्ग टाइम बैक. तो मैं कहते एक दिन कनक च भी कीड़ा पै जाऊगा, की खाओगे? मैं क्या महाराज फिर तुसी खिलाओगे अपने सारी दुनिया नूं. मैं क्या होर तां कोई चारा नहीं हैगा. तो कहते ऐ कर, आज अनार दी कटोरी है, एक खा जा और आ गिलास अनार का जूस पी जा. वो एम्पायर स्टेट दे गेट दे बढ़न तो पहला. Now that would be a few hundred meters. So I understood कि भी ये कोई लीला है मालिक की. So I just put the anar in my mouth, just 2-4 दांत मारे, ऊपर से जूस पिया है. And I, with his kripa, I managed to finish it before we entered the gate. What he did, I do not know, but definitely वो सबका भला करता है. वो सारे संसार को देखेगा. But we also have to do our part. Seva is very simple. Have a clean heart. That's most important. अगर गुरु कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है. गुरु से सवाल ना पूछो. आज मैं ऑब्वियसली बहुत सारे ने बुक पढ़ी है सुखमय जी दी. हाँ जी. फेथ पे गुरुजी पे रखना और टेस्ट, बिकॉज मैं भी देखिए कि बहुत लोग बहुत टेस्ट देते हैं. बट मैं सोचा अगर तो सिंगापुर में पता लगे थोड़े मुंह तो गुरुजी के टेस्ट क्यों असं देने, क्यों ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी पे ठीक है माड़े टाइम आते हैं, बट टेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? वो इस तरह जी कहते होंगे सीगे, तुसी भी तो कहते घड़ा लेने हो ठोक बजा के. कच्चा घड़ा तो नहीं ना लेते हम लोग. तो कहते मैं भी अपना भगत कहते ठोक के लेना, बट अंदर हाथ दे के रखता हूं, टुटन ही नहीं देता. सो दैट्स हिज वे. प्यार तो सब नाल करते हैं. वी आर ऑल बराबर, वी आर ऑल इक्वल. बट कहते हैं जैसी क्लास अपनी लैदा लैदा होती है. परिवार च भी जे 5 लोग हैं वो 5 की क्लास लैदा लैदा होगी. एंड दैट क्लास वो सिर्फ मेरे को पता है और किसी को नहीं पता. So we don't want to know the class. We don't want to know anything. मालिक तू टेस्ट करता है, देन वाला टेस्ट भी तू ही और पास करने वाला भी तू ही. Just keep that attitude. बस.
And this book, I just want to say, not that because my daughter has written it, इसको 2003 में बोला था सुखमनी तू बुक लिखेंगी. एंड सुखमनी comes to me, मॉम गुरुजी को मेरे स्पेलिंग का हाल नहीं पता कि मेरे को कह रहे हैं बुक लिखेंगी. मैं किसकी फर्स्ट पता नहीं क्या मालिक ने किया है. एंड यस, he used to tell her, we used to all have diaries in our purses, you know, so after each meeting before we went to sleep, we used to write down main things and whatever he said that day. So that's how she's been able to produce. And he used to say, Sukhmani, aag likh le. So it was his doing. वो लिखवा रहे थे for this particular time कि जो लोग गुरु को नहीं मिले हैं, they are also very great. They may be even ahead of line from all of us. But उनको what really guru is should be known. And I will say this, that वो 110% correct है जो इसने लिखा है. हमारी जरूरत नहीं है कि हम गलत लिखें या अपनी तरफ से बना के लिखें. 2011 में फिर इसको आने लगा कि भी लिख. And then she started, then we all put our diaries together a little, though this is only 1/10, अभी हुक्म नहीं है. So then we started, she started writing. And the day this book was published, इसको आई है एंड टेलीपैथी में बोल के गए हैं, सुखमती तेरी बुक नो ऐसी ठप्पा लाता. She forgot to tell us. We three share our telepathies, my 2 daughters and myself. तो जब ये चाय पी रही है और पेपर पढ़ रही है तो उसके कान में आपकी आवाज देके बोलते हैं, सुखमनी तू सुनिया नहीं, तेरी बुक नो ऐसी ठप्पा लगा. So she is just a medium जिसने ये बुक लिखी है गुरु की कृपा से, अरेंज्ड बाय गुरुजी. इस बुक को ठप्पा गुरु का जरूर लगा हुआ है. एंड दिस बुक इज डूइंग वंडर्स. इट्स हीलिंग पीपल बिकॉज हमें फीडबैक आ जाती है ये गुरु की रजा है, उसकी बुक है. ये तो सिर्फ एक कारण बनती है. एंड आई कीप रिमाइंडिंग हर, शी रिमाइंड्स हरसेल्फ कि हम कुछ नहीं है, ये बुक हमारी नहीं है, ये बुक गुरु की बुक है. एंड इट्स द ग्रंथ. इट्स नॉट इवन अ बुक. कांट इवन कॉल इट अ बुक. And I will say everything is very correct. People have questioned us, वो जो पीछे आपने चार्ट बना के दिया है रेड कलर एंड ऑल, ये भी गुरुजी ने इसको बुला के खुद लिखवाया है. It is not just that on Sunday you have to wear everything red. Even a spot of red somewhere will help. It will attract the positive vibes. People don't understand. Astrology is a science, he said, but आज यहाँ धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसको पूर्ण विधि आती हो इसकी. So whatever is in that book, the vachans, we have not been changed A from B. We don't have the authority to do that. We used to see Guruji wearing yellow at Empire State on Thursdays. Yellow पांदे से गुरुजी. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਗੁਰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ गुरुजी ने किया ਸੀਗਾ. ਹਾਂਜੀ, उनका कर्म है जी, उनका ये कर्म है, वो उस लेवल में है, उनको ये चीजें करनी ही करनी है. बट गुरुजी देन टोल्ड अस दैट डे जिस दिन मेरा उतारा था कि ये ऐसी बड़ी सजा है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि उसको कीप देना पड़ेगा. ये उसके कर्म है. वी हैव दिस थिंग कॉल्ड कर्मा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट ब्रेक अ पैटर्न ऑफ लाइक दैट. ये लेवल्स है. एवरी ह्यूमन बीइंग टुडे हैज her or his own level, which Guru knows, we don't know. और ये भी है कि बोल के गए ये टाइम बनाने के लिए राक्षस और राक्षसनियां भी पैदा हो रही हैं. तो ये वक्त ऐसा है, बट इस मालिक के हाथ में सब कुछ है, वो आसानी से निकाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है. We human beings have become so selfish and destructive towards Prakriti. We thought this earth is ours, but we forgot कि we are just guests here. तो ये सब lessons हैं हमारे लिए.
आंटी एक संगत ने मैंने लिखा पूछने कि इज देयर अ वे वी कैन डू टेलीपैथी विद गुरुजी, हाउ शुड वी कनेक्ट विद गुरुजी? जी, we cannot do because his level is very high. That vibration we cannot reach. He can do. He initiates. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ not everybody ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। So just leave it कि मालिक जिस दिन तेरी इच्छा हो जे बादशाह दर्शन ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। तो क्या जी जब ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ when she came she was on a manji. yes To hear that once again if you ਹਾਂਜੀ कदी नहीं भूलता। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, we were very few people, must be about 7-8 people. So this lady had come with another lady. तो गुरुजी ने उन्होंने बुलाया बिठाया एंड कहने आंटी तू किटी पार्टी तो आई है, कहने हाँ जी ना जाया कर। But you know they were those modern people who did not understand at that time. ये किसी की गलती नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट सम पीपल कुदरती गुरु उनको अंडरस्टैंडिंग देता है, सम पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। सो गलती किसी की भी नहीं होती है, कर्मा होता है ये। Those two ladies were sitting listening, they were not very interested. तो गुरुजी की चाय लाई बना के तो उन्होंने अपनी चाय जो महाप्रसाद है पी के थोड़ा सा छोड़ के उस लेडी को दिया कि आंटी ने पी ले। वो कहती गुरुजी सॉरी मैं झूठा नहीं लेती। So we all looked at her कि तू की कीता, but we can't say anything. बुद्धि and कर्मा. तो गुरुजी कहते अच्छा तू झूठा नहीं पींदी चल, उन्होंने किसी होर नूं दे दिता। उस तो बाद again when we were there once, this lady was brought on a bed. तो गुरुजी कहते आ गई आंटी, इसी चीज का इलाज कहते तेनों मैं उस दिन गिलास च दिता सी ते तू क्या सी आई डोंट ड्रिंक झूठा। डॉक्टरों ने जवाब देता सी बट गुरु ने फिर भी उहदा इलाज किया। दिस इज आवर गुरु। Aunty, I think Daddy ji, that's what Sukhi Aunty, Sukhmani ji wrote in that Guruji gave darshan to him of Guru Nanak Dev ji. Am I right in remembering? हाँ जी हाँ जी। की ਹੁੰਦਾ है मेरा क्वेश्चन है अंदर आंदा है क्वेश्चन ये वो जो दर्शन मिलते हैं मतलब इज इट एक्चुअली हाउ इट फील्स दैट यू सी गुरु नानक देव जी या शिव जी उन्होंने भी बड़ी व्यवस्था की होनी है ਉਹਦੇ ਲਈ। हाँ जी हाँ वो ऐसे था जी, मेरे फादर ਨੂੰ हमेशा संत कहने ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ and previous life connections are there also for our family. So मेरे फादर को वो पाठ करवाया, कमरे में बेड ऐसे खड़े करके बीच में एक तरफ बाबा जी प्रकाश जी गुरु ग्रंथ साहब जी और दूसरी तरफ गद्दा नीचे लगा के मेरे फादर को पाठ करना था एंड कीर्तन सुनना है, पाठ करना है, एक टाइम खाना खाना है एंड नॉट टू स्पीक फॉर 4 months. So he was explained के ऐसे सांबा आएंगे, शेर आएंगे and you are not to get frightened and then maybe मेरा रूप लेके कोई आए कि मेरे को ले ले जो लेना है जब मांग ले, but how to detect वो उनको बताया था जीरो। उसके बाद after about 2 months he became uncomfortable कि भी मेरे से होगा कि नहीं होगा, that thought came into him and yes animals आते थे उनके पास, ऐसे ही डराते थे कई बार या you know some faces would come and all. Then the power Guru's power संभालोed him and he went through on right up till 4 months. जब last day था, now I don't know, it may not this thing with people, but these are facts. Last day पे सुखमनी पीछे वरांडे में खड़ी थी, गुरु गोविंद सिंह जी came on horseback physical form में और कहते असी साडे गुरुद्वारे च मत्था टेकन आए हैं
and he flew away after that. This is what Sukhmani saw. Then once Guruji was sitting in Delhi, and in our home, उनकी चरणों की फोटोग्राफ थी, which started glowing, and 10 गुरुओं के साक्षात हमें दर्शन करवाए हैं. And then he used to tell me 10 दुनिया नू के असली शक्लां तां है ही नहीं जिहड़ियां कैलेंडर्स च बनियां हुई है या we see it's their imagination, and that is true. Guru Gobind Singh ji पतले हैगे, सांवला कलर हैगा उन्हां दा, and he would be around 5'8". Guru Nanak Dev Ji सिद्धि पगड़ी सिद्धि उन्हां दी, white beard सी, so one could make out. 6वें पातशाह, yes, he is big, बाकी नहीं पहचाने गए बिल्कुल भी. This is, and then there was this one person, one judge sitting with him in Delhi. उन्होंने क्या कहते जा सुखी नु पूछ कि मैं उसनो और उधे मेरे फादर एंड माय डॉटर उन्होंने कहते मैं 10 गुरुआं दे दर्शन कराते हैं. एंड हियर वाज माय सवाल के मालिक ते तो सिवा और कौन करा सकते हैं. वी कैन टेल समबडी जूनियर टू अस के जी उठ के खड़े हो जाओ, सो एंड सो वांट्स टू मीट यू, हु इज ही जो दर्शन करवा सकता है. ये 10 द्वार तो ऊपर ही से ना मालिक है. ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिज हैंड. So, Kyaji, Guruji, the sense of humor can't be beaten ever. No, not at all. So, anything which you can connect, and Sukhmani ji told me the PRO thing with you. Aunty. Something PRO wala the anything humorous which you can connect to. Something really new. I'll tell you one thing. Once we used to be with him from say about 3 o'clock till about 8:30 in the morning. And एक दिन अखबार हिंदी का आया तो सुखमनी नु कहंदे तक पढ़ के सुना मैनू आ फोटो की दी है कहंदे. So Sukhmani read in Hindi, somebody getting married, Christian wedding है, she is wearing a diamond से जड़ा हुआ dress, and husband is a dark complexion. तो उन्हें दस्या कि गुरुजी ऐसा है कि 2 का ब्याह हो रहा है. कहंदे लै नहीं लगता, कहंदे कोले दी बोरी खड़ी है नाल, कहंदे कुड़ी इन्नी सोहनी है, कहंदे कोले दी बोरी खड़ी है नाल, कहंदे and we really laughed, you know. And एक बार इंजेक्शन लगवा रहे थे and he used to call us, he used to tell us 6 बजे शुरू चंडीगढ़ से 11 बजे बजो गुरुजी के मंदिर in Delhi. तो एक दिन जब हम लोग गए, then he keep us in his room till about sangat time. So one day he says, we go and we see कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं. इंजेक्शन कदे बी कॉम्प्लेक्स के, कदे कैन कन चला दो ऐदा, कदे कैन मेरे बॉटम चला दो, कदे कैन बांध से ला दो. एंड आई एम वंडरिंग गुरुजी के कान में कौन लगवाता है इन द लोब. तो लगवा लिया उन्होंने, अपने बॉटम पे लगवा लिया. उसके बाद ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ बैठे थे उन्होंने भी लग गए. माता जी ऊपर से कहते मेरी मां भी बुलाओ, उन्होंने भी घोड़े वांगू बना दिए, उन्होंने भी लग गया. रह गई सुखमनी एंड माय सेल्फ. हम तो डर के हमारे बुरा हाल हमारा, हम ऊपर देखे ही ना, गुरुजी से आंख ही ना मिलाए कि हम नेक्स्ट इंतजार बारी. तो देन आई जस्ट सेट इन माय माइंड, गुरुजी मैंने तो बहुत डर लगता है. सुखमनी तो वेंट बिहाइंड द पिलर थिंकिंग के Guruji can't see her, but of course he could see through walls also. तो मैं अपनी आँखें नीचे करके मैंने कहा गुरुजी अगर मेरे को आपने लगवाया है, मेरे को पकड़ना पड़ेगा, मैं तो बहुत डरती हूँ. So then he says, okay, so I looked up at him. चल ऐ कर, चाह चुक मेरा कप मग चाह दा, अखबार ले, चल ड्राइवर ने बुला गड्डी चलिए. So he took us in the car. अखबार पढ़ के सुखमनी के सिर से सिटी गए. And he was lying down at the back, and हम सारा गुड़गांव घूम घुमा के वापस आ गए. तो हमारा जो करना था उन्होंने ऐसे कर दिया. He did not get that injection. Okay. Aunty, one last question from my side is, मैं बड़े सत्संग सुने हैं, गायत्री आंटी का भी सुने कि जदों गुरुजी ने उन्होंने कहा कि अंकल इन्नी टेंशना क्यों ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ जी, उन्होंने जदों सुनिया सीगा कि 2 वक्त की रोटी गुरु ने सब लिए रखी हुई है. एंड देन
रब की मां ने रब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ बहुत परेशान करेंगे ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ बट जिस तरह मैं देखना गुरु जी कहते चलो 5 साल ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਆ you know lost my sister also last year but मैं देखना कई बार गुरु जी 5 साल दे देते हैं ਇਹ ਕਿੰਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚ ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹੂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਹੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਸੁਖੀ ਰਹੂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਹੂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੰਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ that is why he some were cured some were not cured क्योंकि वो आगे का देखते थे and here I will tell you another thing that there was a lady who used to come and say कि मेरी बेटी के issue नहीं है and the in-laws trouble her so much कि गुरुजी बेटी दे दो गुरुजी से मंगो ना तुसी गलत मंग लोगे सानू देना पैंदा फिर तुसी कष्ट चुकाओगे जिसे गुरुजी मैं बेटी दे दो पर उन्हां दा मुंह बंद हो जाएगा at least nobody will say anything she was pregnant and she delivered a girl baby girl but the mother died नानी followed child तो जब एग्जाम्पल्स वो देखते हैं दिखाते हैं वो कहते मंगो ना सानू पता है असि केड़े वेले की चीज देनी है तुसी गलत मांग लोगे सानू दिखता नहीं हैगा सानू देना पै जाऊंगा सफर तुसी करोगे so never ask just say मालिक जो तेरी रजा है when my father was in hospital when my husband was sick here we just said मालिक जो तेरी रजा है तू संभाले तकलीफ ना दे जो तेरी रजा है we never said कि save him or do anything बिकॉज हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं इतना कष्ट हो सकता है कि 10 साल अगे मंजे च पए रहन तुसी भी औखे ते ओ भी औखा दसो की करोगे बिल्कुल ठीक है आंटी एक संगत ने पूछे एनी मैसेज फॉर फ्रंटलाइनर्स एज डॉक्टर्स ए माड़े वर्क व्हिच आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज संगत हैज रिटन टू आवर आई विल जस्ट पुट इट एज वन थिंग कि मालिक है बस मालिक को अपने आगे रखो मालिक को हर एक चीज में मुख्य रखो खाते हो पीते हो जाते हो चलते हो सोते हो कीप मालिक विद यू ऑल द टाइम दैट्स ऑल आई कैन से बहुत कुछ बता गए हैं वी आर गोइंग टू गो इनटू अ रफ पीरियड एंड हुक्म नहीं है कुछ बोलने का बट आई विल जस्ट से ही कैन डू एनीथिंग ही कैन मेक थिंग्स लाइटर he can make him vanish उनकी अपनी रजा just keep him with you all moment each and every second of your life keep him with you that's all I say तो क्या जी मैं ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੋ ਈਗੋ ਹਾਂਜੀ मतलब कई लोगों ਦੀ ਈਗੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ कैसे निकालनी है I tell you a very simple शब्द very difficult but yet very simple why can't we try वो कहते हैं ग्रंथ साहिब के बुरे का पना कर गुस्सा मन ना हंडा देही रोग न लगे सब कुछ बल्ले पास so easy yet very difficult but why can't we try we make mistake 100 times but bring yourself back I'll say how I started with myself was कि if somebody said something to me for a few minutes I would get hurt कि ओहो मेरे को ऐसे बोल दिया but I did not do this then I go and stand in front of my guru and I say गुरुजी जे मेरी गलती है 100 जुतियां मेरे सिर से जे ओदी गलती है तो तुसी जानो और ओ जानो यू आर आउट ऑफ इट यू आर हैप्पी यू आर नॉट वरीड क्योंकि योर गुरु विल डील विद व्हेन यू डील विद इट वी आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक व्हेन गुरु डील्स विद एनी प्रॉब्लम और विद एनीबॉडी देन ही विल डील परफेक्ट सो बीच में आना की why should we increase our karma of thinking bad about somebody
or trying to sort of, do the same thing back to them and all. No. बिल्कुल ठीक आंटी, बिल्कुल ठीक. Uncle is requesting again and again for your purse wala satsang. I'm sorry, he's written twice. अच्छा जी, वो पर्स वाला is when the point came when my father was in the hospital. So that is a very long satsang also, very different, very beautiful also. वो ऐसे था कि my husband at that time was not a believer. And हम लोग हॉस्पिटल में थे. My father, I was staying with my father that time, and my father suddenly got this attack. And of course, Guruji had told us everything, and he sent us that day people also to help us. And we did not have money with us. So one of my cousins came and she gave me money. Say, you continue with this till your brother comes from abroad. My brother was abroad that time, and we were in the hospital, but we had no help as such, where money was concerned. एक हमारे पास एक big box of दाल होता था, which my father had received, which was in the kitchen. दाल से एक ड्रम होता था मेरे डैडी के फार्म में से, और एक पपीते का पेड़ होता था. मेरे 1-2 पेड़ थे जो पीछे मेरे फादर के घर में लगे थे. My brother that time never understood. He also never gave us money for us personally. So we used to eat either a papita ka sabzi till it lasted, or we used to have dal every day. We used to take it to the hospital and stay there from 8 o'clock in the morning till 9 in the evening. In between, sometimes my daughter would feel hungry, and it was very, very saddening to me that I cannot give her a full lunch. So I prayed also, and yes, गुरुजी को सुखमनी ने फोन किया कि गुरुजी हमारे पास बिल्कुल ऐसा नहीं है, एंड वी रिमेन हंग्री लाइक दिस. तो हमारे पास दाल होती है एंड रोटी होती है विच वी हैव. तो गुरुजी ने कहा कहते रब रिजक कहते पत्थरां दे जीव नूं भी दिंदा है, तैनूं क्यों नहीं देखदा. एंड आफ्टर दैट a person started coming, giving us soup and sandwiches. Then and that's how we used to have. Then one day, Sukhmani got this thought, okay, let me take a bigger bag, because she is the one who used to go for the blood tests and things like that. So she wanted a bigger purse. घर आई, उसने एक नया जो बॉम्बे से कहीं लेके आए थी पहले, नया पर्स निकाला, उसमें से अखबार निकाल के इसने साइड में करके, and she came with that bag. When she opened the zip pocket of that bag, there were 5 rupee coins full of it. It was a small pocket, and through which we used to get samosas or get a coke for her and things like that. And those coins never finished till I shifted into this land of money. Now tell me, if Malik कितना प्यारा है, कितना दयालु है, उन्होंने हर एक चीज की फिक्र थी. कई बार उस कॉइन से हम 200 रुपया 200 रुपया भी बना लेते थे. And at the end of the billing time, when my father was no more, this caterer was also called. He says, I don't know these people at all. जो हमें सूप देता था and sandwiches लाता था. That's a different satsang. Again, very different, very beautiful. गुरु ने इतनी मदद की है, हम तो खत्म है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम undeserved लोग हैं, very small people, but we love him so much, and we just pray that keep us and the entire world